Dear students, since we are studying retail management, we must know some of the basic accounting terms like transactions. Transaction is the transfer of money, transfer of goods and services from one person to another or from one account to another. Transactions can be of varied types like cash transaction. Cash transaction हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें cash involved हो for receipts and payments. On the other hand, credit transaction is one जिसमें immediately cash involved नहीं करते, हम later date पे payment करते हैं या receipt करते हैं. और next important term is proprietor. Proprietor हम उस बंदे को बोलते हैं जो बिजनेस का ओनर हो, वो कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस में अपना पैसा, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं. कैपिटल वो अमाउंट होता है जो एक प्रोप्राइटर या बिजनेस ओनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में. ये वाला कैपिटल इंक्रीज होता है अगर बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, प्लस अगर एडिशनल हम कैपिटल डालेंगे, एडिशनल पैसा डालेंगे बिजनेस में. ऑन द अदर हैंड, ये वाला कैपिटल लो हो जाता है जब बिजनेस में कोई लॉस होता है या कैपिटल हम निकालते हैं बिजनेस से. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे 1 लाख रुपीज़ से, तो हमारा 1 लाख रुपीज़ हमारा कैपिटल है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एसेट्स. एसेट्स are the property that belong to our business. For example, cash at bank, cash in hand, plant and machinery, buildings, furniture, vehicles, bills receivables, debtors, investments, goodwill, all are examples of assets. Assets can be further classified into tangible assets and intangible assets. Tangible assets are those assets which are physically available, we can touch or feel them, like plant and machinery, furniture, cash in hand are some of the examples of tangible assets. On the other hand, intangible assets are those assets which does not have any physical existence, but they are of some use and benefit to the proprietor or business. For example, goodwill, patents and trademarks are some of the examples of intangible assets. Now let us see what are liabilities. Liabilities are the financial obligations of the business towards others. For example, what business owes to others like banks, creditors for goods supplied, bills payable, outstanding expenses, and bank overdrafts are some examples of liabilities. Another term is drawings. Drawings is the amount of cash or value of goods withdrawn from the capital. It is withdrawn by the proprietor or business owner for his personal use and is deducted from the capital. Debtors are the persons who purchase products from your business or take money from your business, then pay that at a later date. For example, if a person purchases a calculator from your business but he pays for it on a later date, he is a debtor for your business. These debtors are shown in the asset side of the balance sheet because they owe money to your business. On the other hand, the creditors are the persons or businesses that your business owes money. For example, they provide you some stock or some good and then you pay for that on a later date. So your supplier is a creditor for you because they provide products and receive money later. Creditors are shown as liability in the balance sheet because your business owes money to them. Now we will see what are purchases. Purchases वो वाली चीज़ें होती है जिनको हम खरीदते हैं या बाय करते हैं for business और फॉर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल. तो गुड्स परचेज करते हैं हम ऑन कैश भी और क्रेडिट पे भी. ऑन कैश जो परचेज करते हैं उसको कैश परचेज बोलते हैं, गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे उनको क्रेडिट परचेज बोलते हैं. टोटल परचेज हमेशा इक्वल होती है कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस. अब इसी के साथ देखेंगे हम परचेज रिटर्न्स क्या होते हैं या रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होते हैं. रिटर्न आउटवर्ड्स वो वाली चीज़ें होती हैं जो डिफेक्टिव होती हैं या जिनमें और कोई प्रॉब्लम होती है या टर्म्स एंड कंडीशंस पे मैट नहीं करती है, तो उनको हम जो सप्लायर होता है उसको रिटर्न कर देते हैं. सो वी कैन फाइंड नेट परचेजेस, टोटल परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स.
Now we have come to a very important term, that is sales. Sales are the goods manufactured by the company and sold to the end customers. The goods that are sold on cash to the customers are called cash sales, and goods sold to the customers on credit are called credit sales. So total sales are always equal to cash sales plus credit sales. Sales returns or return inwards are related to sales only, because these are the products that are sold by the customers and then return back to the business due to inferior quality, or they are defective, or for other reasons. So we get net sales by deducting return inwards from the total sales. Stock. Stock is the total amount of goods that are unsold on a particular date. जो भी सामान हमारी बिजनेस में मौजूद है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमेशा बराबर होता है गुड्स अनसोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, और क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो भी गुड्स हमारे पास मौजूद हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जांपल, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में अगर हमारे पास 4000 यूनिट बचते हैं और हर किसी की रेट 20 है, तो वो अनसोल्ड रह गए हैं, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 4000 इंटू 20 इज इक्वल 80,000, और ये वाला क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बनेगा। नाउ मूविंग ऑन टू रेवेन्यू। रेवेन्यू वो अमाउंट होता है जो हमें रिसीव करना है या रिसीव किया है फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, और प्लस अर्निंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, कमीशंस एक्स्ट्रा। एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वो वाला अमाउंट होता है जो हमें स्पेंड किया है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, सेल करने में, रॉ मटेरियल्स खरीदने में, सैलरीज में, वेज में, तो इसको हम बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस मानते हैं। सो इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। नाउ लेट अस सी व्हाट इज वाउचर. Voucher is a written document that is in support of a transaction. It's a proof that a particular transaction has taken place and the value stated in that voucher. Vouchers may be in the form of cash receipts, invoices, cash memos, or bank pay slips. Vouchers are important for auditing purposes. Invoice is a document that's prepared when goods are sold to the customers. It is prepared by the seller of goods or cashier. It contains names, addresses of the seller and buyer, date of sale and description of goods with quantities and price. Receipts are the acknowledgements that a cash has been received. It's issued to the party paying cash and given by the party receiving cash. Accounts is a summary of relevant transactions of a business at one place. It can be in the form of person, asset, expense account, or revenue account. Accounts are the brief history of financial transactions of a particular person or item. An account has always two sides to it, debit side and credit side.